Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this very special review of the New Zealand versus Pakistan five-match T20I series, which New Zealand have won by a margin of 4-1. And with me on Grassroots Cricket over here is the OG Grassroots Cricket host and my good mate Nawab Hassan Hussain Qureshi. क्या feel करे Hassan bhai? What are the emotions and sentiments after this pounding? BQ, first of all, always great to see you. Always a pleasure to be here with you. Yar, up till we our innings, which I was really annoyed that I woke up for at 5 in the morning to watch. काफी ज्यादा मायूसी थी, डर था. I think हम 5-0 हारने से बेहतर टीम थे. Eventually Hmm. दिन थोड़ा बेहतर निकल गया. हाँ ठीक है, 4-1, 5-0 से तो बहुत बेहतर है. But I think overall feeling जो है मायूसी की है. Hmm. I'm upset because I think we missed a trick. और हमारे पास हम इससे बेहतर टीम है. हमारा कप्तान इससे बेहतर है, हमारे प्लेयर्स इससे बेहतर हैं, तो वही डिसअपॉइंटमेंट है कि आई फील कि जितना अच्छा न्यूजीलैंड ने खेला उतनी हमने Hmm. बड़ी गलतियां की. सो होपफुली एक लर्निंग कर्व है, इससे कुछ सीखें, उसको अप्लाई करें, एंड द बिगर पिक्चर रिमेन्स द सेम. All of this is irrelevant if you can go and do really well and win the T20 World Cup. But for now, I think it's very, very disappointing is the overall feeling. Yeah, I would say disappointing is apt. And मायूसी जो है हसन भाई रिजल्ट से ज्यादा जो है लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से है मुझे तो बिकॉज we saw them experiment or tinker with the lineup in the first game, and then we saw more of the same for the whole five games, right? Because I wanted to see them, go a bit left field and try some stuff. Left field तो वो गए हैं, मगर वो ये left field था कि साहिब ज़ादा फरहान, your top scorer in the National T20 Cup, who opened the innings over there, was sent in at 5 and then at 7 at Marco Janssen's number, basically. And then also, you dropped Azam after 3 games, you dropped Saim after 4. Usko bhi, mere hisab se dono ko 5 ke 5 match milne chahiye the. And just the strategy looked all over the place with respect to the team composition. Hasibullah, jo PSL mein middle order mein khelta hai, and Wahab Riaz had mentioned, okay, we're thinking of Hasibullah as a middle order batter. He went out to open. And yeah, it felt like Pakistan wanted to try something new, but then they just wanted to try that. And I feel that in T20 cricket, especially when you get a five-match series, which is somewhat rare, ठीक है, आप बहुत different चीजें try करते हो, वो देखने को नहीं मिला. And yeah, I am left very, very disappointed with that. एब्सोल्युटली बहराम, आई थिंक सबसे बड़ा जो इशू यही रहा कि एक तो आपने प्लेयर्स को उनकी पोजीशन में नहीं खिलाया. आपने आजम की बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की. हमने आजम को देखा कि Entry उसकी points. सक्सेस, Entry एंट्री points, पॉइंट्स, और उसके exactly. अलावा हमने देखा कि अब कल के मैच में मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी हुई ये देख के कि जब फखर आउट हुए, whose innings was the reason we won Hmm, that game. basically. आपने नवाज को भेजा थिंकिंग कि नवाज लेफ्ट हैंडर है, उन्होंने पिछले मैच में 3 छक्के मारे थे, तो वही रेप्लिकेट कर लेंगे. इट जस्ट शॉक्स मी कि एज अ प्रोफेशनल यूनिट, as a team of professionals, people like Mohammad Hafiz have played the game at the highest level. He has Hmm, captained Pakistan at the highest level. This is a person जिनका बहुत ज्यादा क्रिकेट का नॉलेज है. वहाब रियाज ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है. आप ये नहीं कह सकते कि एमेचर्स हैं या इन लोगों को कोई आइडिया नहीं है. दे प्लेड एट द हाईएस्ट लेवल, वर्ल्ड कप्स में खेले हैं, बड़े खिलाड़ी हैं. आपको ये हैरानगी होती है सोच के कि किस सिचुएशन में आप अपने लिए ये सोचते हो कि साहिबजादा फरहान को आप 5 पे भेजने के बजाय, जो कि वैसे ही ऑलरेडी उनके लिए बहुत लेट है. hmm, I mean, stage was tailor made for Rizwan and Farhan to open and Hasibullah to come at 5. आपने उस बच्चे को hmm, ओपनर पे भेज दिया, उसको प्रोबेबली कहा बॉल जाके मारो. अब उसने मारने की कोशिश की, वो आउट हो गया. आजम को आपने क्रिटिसाइज किया कि जी वो मारता नहीं है. किसी इनिंग्स में आपने उसको चौथे नंबर पे खिलाया नहीं जो उसकी पोजीशन है. फिर आपने कहा जी वो आके छक्के क्यों मार रहा है, जब तो एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, आजम और साइन को पांचों गेम खिलाने की ही पॉइंट थी, बिकॉज आपको पता है रिजवान क्या कर सकते हैं, आपको hmm. पता है बाबर क्या कर सकते हैं, आपको पता है फखर क्या कर सकते हैं. दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव टू एनीवन. Yeah. आपकी एक्सपेरिमेंटेशन ये थी कि इनके साथ आप कैसे ऑगमेंट करोगे. और आपने हसीबुल्लाह को एक ही गेम दी, जबकि आई थिंक ही वाज डिजर्विंग ऑफ प्लेइंग एटलीस्ट टू इन हिज Hmm, प्रेफर्ड पोजीशन. आपने फरहान को 2 गेमें दी. वो बेचारा कल भी कुछ कर गया, बट अब वो सोच रहा होगा कि मैं ओपनर हूं और 5 और 7 पे खेल रहा हूं. आजम को 3 गेम्स करके ड्रॉप कर दिया, उसामा को ड्रॉप करे फिर वापस लाए. मुझे कोई मसला नहीं है, नवाज एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बट आपको पता है नवाज क्या कर सकता है. यस, कल आपको नवाज और इफ्तिखार की बॉलिंग ने ही जिताया और आपको मैच जीतने के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन चाहिए थी, बट आप उसमें थोड़ा सा करो. मैं हैरान हूं कि वी डिड नॉट ट्राई जमान मोर.
when he's easily Yeah, one of your best. I mean, Zaman for me walks into this T20 side. And absolutely. considering his relationship with Shaheen Shah Afridi, who knows and captains him so well, आपने हारिस को मे बी एक गेम ज्यादा खिला के ड्रॉप कर दिया, चलो अब्बास की इंजरी मिटिगेटेड सक। कल जब अब्बास 8वें नंबर पे आए हैं, मैं वहां बैठा Hmm. हैरान हूं कि ये उसने आते ही पहली बॉल पे सिक्स मार के आपको दिखाया। देखें मेरा, बहुत कम प्लेयर हैं जो कि एक पीएसएल फाइनल में आते हैं जब आपको 30 रन चाहिए और हारिस रऊफ जैसे बॉलर को एक ओवर में 20 रन मारते हैं। अब्बास इज वन Hmm. ऑफ दोस प्लेयर्स, ही हैज द कॉन्फिडेंस टू डू इट। तो मायूसी है और हैरानगी है कि हमने किसी भी प्लेयर को उसकी जगह पे यूटिलाइज नहीं किया, और हमने दूसरी टीम में देखा उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। जो एक प्लेयर की Yeah. स्ट्रेंथ है वहां पे उसको खिलाया। जो एक उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा जी रविंद्रा को ले आए तो उसको 8वें नंबर पे भेजेंगे, चैपमैन को खिला Hmm. रहे हैं तो उसको यहाँ खिलाएंगे, सऊदी से डेथ पे बॉलिंग कराएंगे। एंड आई थिंक वो एग्जांपल हमारे सामने है कि एक टीम ने अपनी Yeah. स्ट्रेटजी को फॉलो किया और एक टीम ने सोचा हम हर मैच में अपने दूसरी टीम को सरप्राइज करेंगे, बट आई थिंक अपने आप को ज्यादा सरप्राइज कर बिल्कुल। एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लेयर यूटिलाइजेशन, रोल क्लैरिटी, ये सब वो चीज़ें जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बेस्ट करती है शायद दुनिया में, एंड पाकिस्तान क्रिकेट डज नॉट हैव अ ग्रेट रेपुटेशन फॉर इट। ऑफ कोर्स, लाइक एज यू मेंशन्ड, नवाज एंड इफ्तिखार, दे अल्टीमेटली केम गुड, दे बेल्ड यू आउट इन दैट गेम, एंड फखर वाज बैटिंग ऑन अ डिफरेंट विकेट ऑल टुगेदर, राइट? बाकी कंबाइंड स्कोर था जो मैच का, वो स्ट्राइक रेट उसकी अंडर 100 थी, फखर की पता नहीं आसमानों को छू रही थी। बट विद रिस्पेक्ट टू आजम, ठीक है यार, आपने उसको 3 गेमें खिलाई, मेरे हिसाब से 5 मिलनी चाहिए थी, मगर पहले आपने उसको वो मैचअप नहीं दिया लेग स्पिन वाला। यार फिर आपने जब उसको दिया, ही फेल्ड, ऑलराइट, ही फेल्ड, लाइक ही गॉट आउट टू ईस्ट सोधी एज़ वेल। एक तो दुनिया को ये समझना चाहिए कि मैचअप अगर आप मैक्सिमाइज़ कर रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर आउट ही नहीं हो सकता उस तरह के बॉलर पे। और दूसरा यार, अगर आपने मौका देना ही था तो फिर सही तरह देते ना, उसको उन पोज़ीशंस पे भेजते जहाँ पे आज़म की इन थियरी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सकती। आपने यू डिड हिम डर्टी लाइक दैट, एंड नाउ ही इज़ another question mark going into the future, whereas you needed someone in the middle order to hit sixes, and he does possess that capability, right? बहराम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने फिन एलन का है। जब सीरीज स्टार्ट Hmm. हुई तो उनकी एवरेज 22 थी। पाकिस्तान Hmm. में एक खिलाड़ी ओपनर इतने मैचेस खेल के 22 की एवरेज में सर्वाइव ना करता। Yeah. उन्होंने ना सिर्फ उसको बैक किया, उन्होंने जब श्रीलंका आया, आई थिंक इन हिज फर्स्ट इन दैट सीरीज दैट ही प्लेड इन श्रीलंका और बांग्लादेश, आई थिंक ही हार्डली मेड अ रन। दे नेवर स्टॉप्ड बैकिंग हिम। दे बिलीव्ड इन हिज एबिलिटी, दे अंडरस्टूड कि ये क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वो लेके आता है। उसने हर मैच में परफॉर्म किया। अच्छा, अब जिस मैच में परफॉर्म नहीं किया, अब हम कल कहेंगे कि जी कल आउट हो गया, क्या Hmm. आपने कहीं पे किसी को सुना कहते हुए कि जी इसको ड्रॉप होना चाहिए? अबे भाई, वो उस सेंचुरी के ऊपर डाइन कर रहा है जो उसने 3 मैचेस पहले मारी थी। तो Hmm. स्पेशली विद यंग प्लेयर्स, आजम की तरह, साइम की तरह, जिनका आपको पता है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। सेकेंडली, एक और बहुत बड़ी बात, आपने आजम और साइम की सक्सेस पाकिस्तान में और सीपीएल में देखी, ठीक है? Yeah. वहां पे वो अच्छा खेले हैं, आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो न्यूजीलैंड में आते ही हर बॉल पे, पहली बॉल पे छक्का मारेंगे, मैच जिता देंगे। ये इनके लिए एक मौका था, और ये सबसे जरूरी इस मौके की जो चीज थी वो थी कि उनको 5 गेमें दे के आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा के कहें कि देखिए Hmm. अपनी नेचुरल गेम खेलें, आपने ये फिक्र नहीं करनी कि आप ड्रॉप होंगे। और ये कह के कि हम आजम जैसे मैच विनर को ड्रॉप नहीं करेंगे, उसको ड्रॉप Yeah. करके आपने लड़के के ऊपर बड़ा, बिकॉज देखिए अब एक अच्छा पीएसएल खेलेगा वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आजम और साइम दोनों अच्छा पीएसएल खेलेंगे। फिर वही सवालात उठेंगे। तो Hmm. आपने प्लेयर्स को नर्चर करना है, आपने यंग प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, इसके बजाय कि आप अननेसेसरी सिचुएशंस क्रिएट करें। एंड आई थिंक वो आपने ना, उसकी मायूसी हसन होती भाई, है। आई थिंक एक्सपेरिमेंट कर जी, कर भी आप कुछ सीख नहीं सके। आपने एक्सपेरिमेंट कुछ के भी नहीं, नाम पे एक कुछ भी धोखा नहीं। धोखा ही किया बिल्कुल, है, एक तरह बिल्कुल। का। एंड विद आपने रिस्पेक्ट, आपने आपने कहा था नान बनाएँगे और उसमें कुछ डिफरेंट होगा, और एंड में आपने नान ही बनाया और उसमें कुछ डिफरेंट नहीं था। वाकई। एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज वी ऑल नो व्हाट आजम एंड साइम आर केपेबल ऑफ, बट अगर आप साइम यस, अयूब की प्रोग्रेशन देखें सीरीज में, वी सॉ द साइम अयूब वी वांट टू सी इन द फर्स्ट गेम, यस, एंड इट जस्ट फील्स लाइक समवन हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद हिम टू पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट, एंड ही डिडंट कम गुड आफ्टर दैट। लाइक, आई एम नॉट श्योर कि क्या साइकी होती है इनकी, क्योंकि वी नीड प्लेयर्स ऑफ द मोल्ड ऑफ आजम एंड साइम, एंड इवन मोहम्मद हारिस। लेट डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन मोहम्मद हारिस राइट नाउ, या ठीक है? लेट्स नॉट पहली गो देयर, पूरी लेट्स दुनिया से नॉट मैं एट लड़ रहा ऑल। हूँ वहां पे उस फ्रंट पे। तो anyway, it's just really sad to see how young talent is not being nurtured the way it should. And what's even worse is that, and I mean, a lot of people might disagree with this, don't slaughter me for it, but most of your core players in Babar, Rizwan, Shaheen, I might be missing someone over here, कोई ना कोई और, ये सारे मैच खेले हैं यार, इनको रेस्ट कराते ना आप, ठीक है?
जहाँ पे रेस्ट कराना था, वहाँ पे कराया नहीं। वी ऑलरेडी नो व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। वो 5 के 5 मैच खेल रहे हैं। शाहीन, जिसकी हमेशा फिटनेस का एक कंसर्न रहता है, वो 5 के 5 मैच खेल रहा है। ज़मान, who should have been a shoo-in after the year he had in franchise T20s in 2023. He should have played all of those 5 games. क्या चक्कर है कि पाकिस्तान में ये क्या इनसिक्योरिटी आ जाती है? इज़ देयर some sort of sentiment that we lose our spot if we don't play every game? What is it that the senior players are played consistently, and what you miss out on is learning new things? Because we know that Babar and Rizwan, if they open, they'll get Pakistan to a power score, and Pakistan at times will defend that, and when they'll chase, they'll more often than not get it right. We know these things. मगर आपने क्या कोई और तरीका नहीं बनाना जीतने का कि if plan A doesn't work, we have plan B, C, D, E. आप उस तरफ या उस तरीके से सोचते ही नहीं हो, and it feels like the score line matters a lot to them, the results matter a lot to them. तो क्या हासिल कर लिया आपने? एंड में तो रिजल्ट्स भी नहीं मिले। एग्जैक्टली exactly, और आपको कोई सरप्राइजेस नहीं मिले क्योंकि एग्जैक्टली exactly जैसे आपने कहा आपको इन प्लेयर्स की क्वालिटी का पता है, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। आपके पास एक सीरीज है जिसमें आपके पास एक मौका था एक्सपेरिमेंटेशन करने का। आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका था कि अगर आप उस एटीट्यूड से जाते कि जी हमने एक्सपेरिमेंट करना है नो मैटर व्हाट। आपके पास हुँ, 5 ओपनर थे। उन 5 ओपनर्स बिल्कुल, में से आपने मैक्सिमम जो 3 से ओपन कराया, उनमें से एक तो हुँ, ओपनर नहीं था। ठीक है जी। बिल्कुल। आपके पास एक वेल, नंबर 4 था। डोमेस्टिक में करता है हसीब ओपनिंग, बट he hasn't been groomed in the PSL as an opener, so you can make that सो point for sure. आई मीन ठीक है डोमेस्टिक में तो करता है, बट माय पॉइंट इज कि आपने आपने अब डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी इफ्तिखार आपके फिनिशर हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी आपने आजम को जिस पोजीशन में खेलते हैं यूटिलाइज नहीं करना। आपके पास ये बड़े खिलाड़ी हैं, आपको पता है ये क्या करते हैं, इनके रिकॉर्ड्स आपके सामने, इनकी एबिलिटी आपके सामने है। सबसे ज्यादा जरूरी अब लोग लोग बार बार, और इस पे आप स्लॉटरिंग की बात कर रहे हैं तो मेरी कुर्बानी पे आ जाते हैं। लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम होता है कि जी आप बार बार क्यों कहते हैं। देखें, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं। इस वक्त एक क्रिकेटर है जो मेरी नजर में पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में जब वो फिट होता है तो वो ऑलमोस्ट मेरे लिए इज द फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट, दैट शादाब खान। ही इज या, एन ऑल 3D प्लेयर, ठीक है। बट अब हुँ, जब शादाब 4D, इंजर्ड है और वहां पे नहीं है, 4D एग्जैक्टली इंजरी है। 4D, ही कैन कैप्टन, ही कैन बैट, ही कैन फील्ड, ही कैन बॉल। अब हुँ, शादाब इंजर्ड है, उस टूर पे नहीं है। शादाब के लिए आपकी रिप्लेसमेंट एक लेग स्पिनर होनी चाहिए। उसामा का डेब्यू बुरा गया, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। ही पुल्ड इट बैक बेटर, केम बैक द नेक्स्ट गेम, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। कल वो अच्छा खेला, अब कोई गारंटी नहीं है कि आगे उसको जाके मौका देंगे। आपने अगर अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट ही नहीं करनी, आपने अगर देखना ही नहीं है कि खुदा ना खास्ता शादाब के एब्सेंस में आपका नेक्स्ट बेस्ट लेग स्पिनर, और क्योंकि आपके पास इस सीरीज में अबरार नहीं थे, या तो मैं हुँ, अंडरस्टैंड करता कि आप उसामा को ड्रॉप करके अबरार को खिलाएं, आप अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। आपने मौका मिस किया। न्यूजीलैंड ने अपनी स्पिन रिसोर्सेज को हर मैच में यूटिलाइज किया, ठीक है जी। उन्होंने हुँ, यूटिलाइज किया, आपने वो मौका गवा दिया। आपको आपने 5वें मैच में जाके इफ्तिखार को बॉलिंग दी, उससे पहले आपने हुँ, उसको यूज ही नहीं किया, हता कि आप हर मैच में उसी स्ट्रेटजी के साथ जा रहे थे कि जी हम चेस करेंगे, हम इतने रन नहीं पड़ेंगे। तो सीनियर प्लेयर्स को कंटिन्यूअसली खिलाना, इसका मतलब है, सीधी सी बात है बहराम, हम डरपोक हैं। हम नई हुँ, चीजों से डरते हैं। हमें डर लगता है कि जी क्या कहा जाएगा अगर हम अगर आप बिना एक्सपेरिमेंट किए 5-0 हारने वाले थे। ये बेहतर हुँ, नहीं था कि आप डिफरेंट चीजें ट्राई करके आपको आइडिया हो जाता। अगर साइम और आप फखर से एक मैच में ओपनिंग करा लेते और वो दोनों आपको बड़ा स्कोर दे, बेशक आप मैच हार जाते। आपको हुँ, आइडिया तो होता ना कि जी किस कंडीशंस में कौन कैसे। हसीब को आप 2 मैचेस नंबर 5 पे देते, आपको आइडिया हो जाता कि प्रेशर सिचुएशन में क्या हसीब फखर के बाद आके इफ्तिखार और आजम के साथ आके क्या वो आपके लिए रन बना सकते हैं। जमान आपके लिए 5 मैचेस में खेलते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं आपको हुँ, पहले मैच में इतना रन ना पड़ते, दूसरे में ना पड़ते। जिस मैच में वो खेले वो इकोनॉमी अच्छी, शाहीन के ऊपर से प्रेशर उतरता। हुँ, रऊफ को कितनी दफा नए नई बॉल से बॉलिंग करानी पड़ी, उनको मार पड़ी, फिर वो वापस आके डेथ पे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई रऊफ ने। बट लोग या, यही याद रखेंगे कि हारिस रऊफ को न्यू बॉल पे जहां पे वो ऑफ्टन बॉलिंग नहीं कराता, मार पड़ी। हुँ, आजम का यही याद रखेंगे कि जिसने एक ही छक्का मारा विदाउट लुकिंग इनटू द फैक्ट्स कि वो कौन सी सिचुएशंस में बैटिंग करने आया। सो आई थिंक हुँ, आपने एक मौका मिस कर लिया, और आपको क्या मिला, आपने 5 और मैचेस उन खिलाड़ियों को दे दिए जो ऑलमोस्ट आपके लिए अनड्रॉपेबल है, बिकॉज आपको उनकी क्वालिटी का पता है। तो बस एक मौका था और उस मौके को आपने गवा दिया। और हुँ, मैं कहूंगा कि मैं बहुत मायूस हूं आपकी टीम मैनेजमेंट से, जिसमें आपके या, पास समझदार लोग हैं जो क्रिकेट के बारे में बात भी जब वो टीवी पे होते हैं तो वही बातें कर रहे होते हैं कि जी यंगस्टर्स को मौका दें, चांस दें और चीजें ट्राई करें। जब वो पोजीशन ऑफ पावर में आते हैं तो वही चीजें जिनको दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं टेलीविजन पे आके, वही चीजें वो खुद कर रहे होते
बिल्कुल। अच्छा, यू टच्ड ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ओवर देयर। सबसे पहले मैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे आऊँगा। फ़खर ज़मान बाय द वे इज़ अनदर प्लेयर हू प्लेड ऑल ऑफ दीज़ गेम्स। आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर इश्यू विद दैट, ठीक है? फ़खर को यूटिलाइज़ करो आप, ही इज़ काइंड ऑफ टेलर मेड फॉर टी20 क्रिकेट। व्हेन ही गेट्स गोइंग, ही कैन विन पाकिस्तान, 9 गेम्स आउट ऑफ 10। मगर एग्जैक्टली। यार, आप ट्राई तो कर देखो, साइम और फ़खर को ओपन करके दिखा लो, किसी मैच में फरहान और फ़खर को करा लो, किसी मैच में साइम और फरहान को करा लो। मेरी तरफ से यार किसी मैच में बाबर और रिजवान को भी करा लो। मैं चाहता था कि मैं हर मैच में डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखूं और डिफरेंट कॉम्पोजिशन देखूं, ओपनिंग लाइक ओपनिंग को छोड़कर पूरी बैटिंग ऑर्डर की, बारिंग द मिडिल ऑर्डर बैटर्स, क्योंकि उनका थोड़ा वो एंट्री पॉइंट्स वाला सीन हो जाता है। बट वी सॉ नन ऑफ दैट। आपने इस तरह का फैसला कर लिया था कि बाबर वन डाउन और ऊपर साइम और रिजवान खेलते रहेंगे। रिजवान, सॉरी, जब साइम फेल हुआ तो उसको निकाल दिया आपने और आपने हसीब को डाल दिया। इट जस्ट सीम्ड वेरी वेरी imbecilic. That's what is the word that I use. I was like, I have no issues with results, but I do have an issue with imbecilic strategy, batshit imbecilic strategy. And the fact that you did not experiment with your opening combinations, you learned nothing. अब आपको सिर्फ यही पता है कि हाँ, वो बाबर रिजवान वाला तरीका में आता है जीतने का। और क्या तरीके आपके पास आगे जाकर? बॉलिंग में आपने यूटिलाइजेशन की बात की, तो यार, हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स में जहां वो हिट हुआ था, जिस परफॉर्मेंस की वजह से वो इतना खेल गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद तो आपने उसको कभी घास ही नहीं डाली थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, राइट? वो तो मेलबर्न स्टार्स ने उसको वो प्लेटफॉर्म दे दिया। आपने यार जिस बंदे को वो आखिरी 6 ओवरों में 3 देते थे, आप उससे पहले ओवर करा रहे हो। यार चलो दे दो एक पावर प्ले में ओवर, ठीक है? मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि पावर प्ले वाले बॉलर ही नहीं सिलेक्ट हुए थे, नवाज को ट्राई कर लो। ये जरा सिलेक्शन कमेटी पे भी बात जाती है, लाइक व्हाई वर यू, लाइक व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर सिलेक्टिंग दीस प्लेयर्स, व्हेन यू सिलेक्टेड 5 ओपनर्स with no clear plan? The guy you kind of earmarked as a middle order batter went on to open, and then in the bowling, Shaheen was like the lone pacer who could bowl with the new ball. हारिस को चलो एक ओवर आपने दे दिया यार, बाद में उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर लो। डेथ में उसने आपको जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई है। बट आप वाली बात है, पीपल find it very convenient to bash Haris Rauf. I feel like he's another one of those cricketers ऑफ जिसके कोर्स ऊपर इट्स हेट इजी। करना बिल्कुल। बहुत बहुत आसान आसान है हो जाता यार। उसका ट्रेड ही ऐसा है, फास्ट बॉलर को पड़ेगी तो सही, ही इज योर विकेट टेकर, बट इफ यू आर पुटिंग हिम इन सिचुएशंस where he doesn't even know how to operate, then you're basically setting yourself up for failure, and also Haris Rauf up for failure. So the bowler utilization in particular was quite baffling, because अब मुझे नहीं पता यार, I was impressed with Shaheen in the PSL, कलंदर्स के लिए अच्छी कप्तानी की है। I don't know if the decisions are coming from Hafiz, if it's the leadership group or what, but आपके 6 ओवर में पावर प्ले में 2 शाहीन, 2 जमान और 2 रऊफ करा रहे हैं। गिव मी अ ब्रेक। दैट इज नॉट हाउ यू प्ले टी20 क्रिकेट। इतनी तो हमें भी समझ है कि ये नहीं करना। आप एक एक दे दो और 2 ओवर नवाज से निकाल लो, फिर उनके 6 ओवर आप एंड के लिए बचा लो। मगर वी डिड नॉट सी दैट। एंड एज बैड एज द रिजिडिटी विद रिस्पेक्ट टू योर बैटिंग ऑर्डर वाज कंसर्न, शायद उतनी बुरी बॉलर यूटिलाइजेशन थी हसन भाई। बिल्कुल थी। मैं सबसे पहले एक बड़ी जल्दी एक पॉइंट पे टच करूंगा जो आपने कहा था ओपनिंग कॉम्बिनेशंस के बारे में। आपका पीएसएल का सबसे सक्सेसफुल ओपनर फखर जमान है और आपका नेशनल टी20 का सबसे टॉप स्कोरर साहिबजादा फरहान थे। आपने दोनों को एक मैच में इकट्ठे ओपन नहीं करा। यू हैड नथिंग टू लूज। आप साइम को 3 पे ला सकते थे, आजम को 4 पे ला सकते थे और आप उसके बाद इफ्तिखार नवाज, यू कुड हैव बैक्ड द टीम विद बॉलर्स एंड डन वेरी वेल। अब कमिंग टू द बॉलर यूटिलाइजेशन, आपने कभी भी लाहौर कलंदर्स में नहीं देखा होगा कि शाहीन, हारिस और जमान जो हैं वो पहले 6 ओवर करा रहे हैं। ठीक है जी। आपने कभी नहीं ये देखा होगा, और दिस इज टॉकिंग अबाउट बैक टू बैक पीएसएल चैंपियंस, अ टीम दैट इज बिल्ट अराउंड एन इनक्रेडिबल बॉलिंग अटैक। ठीक है जी। आपने अब्बास को देखा, उसने पहले मैच में कराया। अब्बास ने आपको 26 विकेट्स लेके दी पीएसएल में, डेथ पे जबरदस्त बॉलिंग कराते हुए। आपने उसको डेथ पे बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा। आपने नवाज को नहीं यूटिलाइज किया, आपने इफ्तिखार को ओवर नहीं दिए, जो कि वनडेज में भी पावर प्ले में कभी ओवर करा लेता है, कभी पुश कर लेता है। आपने मिडिल ओवर्स में उसामा को ओवर नहीं दिए, जहां पे आपने देखा कि उसकी एक स्ट्रेंथ है। आपने उसको वो फील्ड प्लेसिंग्स नहीं दी। आपने रऊफ को एक इजी कन्वीनियंट स्केपगोट बना दिया उस टाइम पे बॉलिंग या लेके, जब उसकी स्ट्रेंथ ही ये है कि, और उसने हर मैच में जिसमें वो खेला, डेथ में आके बेहतर बॉलिंग करके अपने आप देखे। एक पॉइंट था जब उसको दो ओवरों में 23 पड़ गए थे, एंड उस मैच में उसको 4 ओवरों में 34 पड़े थे, एंड ही केम एंड टुक 3 विकेट्स एट द डेथ एंड गेव 11 रन्स, व्हिच इज एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। बट नहीं, उसको एक ओवर में इतने पड़ गए, हमें वही याद होगा। सो बॉलर यूटिलाइजेशन वाज वेरी पुअर, जस्ट द वे हमारे ने जिस तरह अपना बैटिंग लाइनअप को सेटअप किया।
and whether the decisions came from the captain, who they came. I'm willing to cut the captain some slack because he's still learning on the job. He's still new. Hmm. International cricket is different from PSL. He was missing match winners like Shadab in his squad. He was missing the control and the ability that Shadab brings in. He was missing maybe the opportunity to try someone like Abrar. He was missing a lot of other options. So it's still early. बट व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग इज कि आपने उस स्क्वाड में उन प्लेयर्स को नहीं पिक किया. आपने किस बेसिस पे आमिर जमाल, एंड आई एम अ बिग आमिर जमाल फैन, but Hmm. Amir struggled a bit after his debut in T20, but because he played very well in the test matches, आपने Hmm. आमिर को भी डाल दिया. ठीक है, his batting was good, he fielded well, his bowling struggled. तो it Yeah. just amazes me कि आपने इन प्लेयर्स के साथ भी ज्यादती की. आपने नेशनल T20 के जो अच्छे परफॉर्मर्स थे उनको आपने इतना जब लेके भी गए, जिनको बेचारों को उनको भी 5वें और 7वें नंबर पे खिलाया. तो if we're going to be serious in a squad of 15 and one where if he's fully fit Naseem Shah walks back in, this was a Of great course. opportunity कि आप अपने Naseem and Shadab both walk in कि आप अपनी जो bench strength है उसको check करो. But नहीं, आपने कहा जी वही हम करेंगे. And I really think, I honestly think, जो मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ता है बहराम, और मैंने उस पे जब ट्विटर पे भी लिखा था, अगर आप अपने आप को एक elite side consider करना चाहते हो, जस्ट कंसिडर द फैक्ट कि आपने जो गलतियां की हर मैच में, टॉस जीतने के बाद कंसिस्टेंटली हर दफा उनको दावत देना बैटिंग करने के लिए, फिर अपने लिए चेस करना, जिस तरह आपने बॉलिंग यूटिलाइज की, आपकी बैटिंग कॉम्बिनेशंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड इवन Hmm. पॉसिबली वेस्ट इंडीज, ये टीमें ये गलतियां नहीं करेंगी. हाउ Yeah. कैन यू वांट टू चैलेंज देम एंड बीट देम ऑल इन अ वर्ल्ड कप जब आप इस तरह की गलतियां कर रहे हो? ठीक है, जो भी आप कह दो, एक्सपेरिमेंटेशन भी अगर सीरीज में करनी थी और Hmm. आपने एक्सपेरिमेंटेशन की ही नहीं, तो उसके Hmm. और ज्यादा गुस्सा चढ़ता है कि आपके पास एक मौका था और आपने उसको ठीक तरह से यूज नहीं किया. या एंड ये वाली जो साइट्स जिनका आपने नाम लिया, ये बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करती है, बल्कि बायलैटरल टी20s में करते ही यही हैं. करते ही न्यूजीलैंड को देख लो, एक्सपेरिमेंटेशन. 10,000 चीजें तो उन लोगों ने ट्राई की हैं इस टी20 सीरीज में, ठीक है. एंड जस्ट गोइंग टू थ्रो यू ऑफ अ बिट ओवर हियर, आई एम ट्राइंग टू कैच यू ऑफ गार्ड. Do you think that Rashid Khan bails out Shaheen Shah Afridi, the tactician, in the PSL? No, like, of course he does, because Rashid Khan is an incredible player. Rashid He's a Khan, cheat code. he's a cheat code, he's a match winner, but there's Hmm. nothing wrong with him bailing out Shaheen because that's what he's there for. The thing Hmm. is, are you giving Shaheen those options कि वो अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको आप एक हेल्प दें? देखें, आप शाहीन बिल्कुल. को, अगर आपके पास राशिद खान नहीं है जो कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, क्या आपने उसको ऑप्शन दी कि उसके पास एक मैच में, इस मैच में आपने उसको उसामा, इफ्तिखार और नवाज दिए, जो राशिद 4 ओवर कराता है वो उनमें से निकाल सकता था. अगर उसको किसी Hmm. पॉइंट पे स्ट्रेस हो रहा है कि उसामा शायद अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा, तो इफ्तिखार को और नवाज को ओवर दे Hmm. सकता है. क्या आपने उसको, आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ. Another thing that bails out Shaheen Shah Afridi, the tactician, is having the best opener in PSL, opening for him in the PSL and making big scores that give him the opportunity to defend, or turning tough chases into easy chases because he's Fakhar Zaman. उसको अब आप कह रहे हो, एक प्लेयर जिसकी गेम को शाहीन बहुत अच्छी तरह जानता है कि नहीं, फखर 4 पे बैटिंग करेगा, तो आपने शाहीन के लिए आसानियां भी नहीं पैदा की. एंड Hmm. आप इस तरह से कह सकते हो कि हर कप्तान के लिए फायदे होते हैं. बाबर के पास, जब बाबर कैप्टन थे पाकिस्तान T20 क्रिकेट में, तो उनके पास बड़े वो खिलाड़ी थे. आपने देखा कि आप एक वर्ल्ड कप T20 फाइनल में पहुंचे, आप एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, आप सेमीफाइनल में पहुंचे. हर कप्तान के पास प्लेयर्स होते हैं जो उनको फायदा देते हैं, बट Hmm. आपके लिए एज अ मैनेजमेंट उस कप्तान के लिए वो आसानियां क्रिएट करना आपकी ड्यूटी है. और अगर आप उसको टीम सिलेक्शन ही ऐसी दे रहे हो जिसमें वो ये कर नहीं Hmm. सक रहा, putting all the blame on Shaheen also for a lot of people will be easy right now, because Yeah. everything is suddenly his fault. He's suddenly not a captain who's won back-to-back PSLs and someone who's performed very well in both as a leader. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. थोड़ा सा मेरी भी फीलिंग है कि शाहीन अपने आप को हर दफा बैटिंग ऑर्डर में नहीं प्रमोट कर सकते, बिकॉज हर बिल्कुल. मैच उनके लिए वो, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट इज गोइंग आउट देयर विद इंटेंट. आई थिंक ही लर्न. आपके लिए अब इम्पेरेटिव है कि आप थोड़ी सी आसानियां पैदा करें. मैं, देखिए ना, जो एक 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 चीज पे मैं आना चाहूंगा बहराम, आई मेक इट वेरी शॉर्ट. फिन एलन ने 275 रन्स बनाए 141 बॉल्स फेस करके, ठीक है जी. Hmm. He had a strike rate of 195. Daryl Mitchell had a strike rate of 183. Babers was the second highest scorer, and he really saved Pakistan with his batting in the first 3 games. But his 213 runs came from 150 balls at a strike rate of 142. Fakhar Zaman was your only batsman with a strike rate of 165.
scored 76 runs of 126 runs of 76 balls faced. अब आप देखें ना इसमें मसला क्या नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड ने कंटिन्यूसली अटैक किया। चौथे T20I में जब आपको लगा कि आपके पास थोड़ी सी ऑप्शन है, शाहीन ने अर्ली विकेट्स ले ली, ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल ने आपको 100 स्टैंड मार के कंटिन्यूसली अटैक किया। हमारे लिए वो किसने किया? हमारे लिए वो किसी ने नहीं किया। आपने अब लोग बाबर को भी क्रिटिसाइज करेंगे कि यार उसने 3 50 तो मार दी तो मैच हार गए। तो एक कोई खिलाड़ी, बाबर हो, हारिस रऊफ हो, आजम खान हो, शाहीन हो, एक कोई खिलाड़ी नहीं होता। दे प्लेड एज अ टीम, we were unable to gel as a team, and I feel a lot of it was down to the fact कि हमने वो सिचुएशन ही नहीं क्रिएट की कि टीम जेल कर सके। टिम साउदी ने आपके खिलाफ विकेट्स ली। Tim Saudi bowled so well, but so did Shaheen. Shaheen finished with 1 wicket less than Tim Saudi. But when you look at it, the fact that Tim Saudi got those games, and then you look at the fact कि अब हारिस की सब सारी बात करेंगे, उसका इकोनॉमी रेट उसके बावजूद 10.6 था। और आप ये देखें कि मिल, सोदी, फर्गुसन, हेनरी took 23 wickets between them. The next best we had after Shaheen and Haris and Abbas were Ifti and Nawaz with 3 each, and those both came in one game. There was just not enough support, Behram. And support के बगैर कोई टीम नहीं जीत सकती। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लग रहा था कि ऑफ द फील्ड भी कप्तान के पास सपोर्ट नहीं था, ऑफ द फील्ड भी प्लेयर्स के पास सपोर्ट नहीं था। बहुत सारी न्यूज हमने पढ़ी कि जी अब वो इश्यूज क्रिएट, आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो आप 5-0 भी हार सकते हैं, बिकॉज आपको उसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा मसला यही रहा कि आपने अपने प्लेयर्स को डिमोरलाइज किया, आपने उनको वहां पे डाल दिया, और अब आपकी एक्सपेक्टेशंस है। तो इट्स वेरी इजी टू बी वेरी ओवरली क्रिटिकल। लाइक यू सेड, वी डोंट रियली केयर अबाउट द रिजल्ट्स if we see something that we feel we can build on. The worst thing is that as well as the results, there's nothing we can say that we learned from this. There are no surprises that Abbas bowled well. He was the leading wicket taker in the PSL. There are no surprises that Rizwan and Babar were your top scorers, because we know they can do it. There's no surprises कि शाहीन ने 10 wickets ली। हमें इन सारी चीजों का पता था, बट जो हम सीख सकते थे, एक साइम और फखर की ओपनिंग पार्टनरशिप, आजम मे बी कमिंग इन 1 game at 3, क्या जा रहा था आपका? कुछ तो ट्राई कर लेते। हसीब बैटिंग एट 5, वो हमें देखने को नहीं मिला। Yeah, I mean, quite the rant, Hassan bhai. I've been recording with you for a long, long time, and I don't think I've ever seen you this riled up. And we've been through some tough times with respect to Pakistan cricket before, so I'm happy you're getting this platform to release all of that angst. And I 100% agree with you कि selection committee ने कोई as such help नहीं की शाहीन की, और जो instability up top है administration में PCB में, that definitely doesn't help either. And Shaheen, I've seen elements of, being a good leader in him in the PSL. So I hope that he will learn and he will be better for Pakistan. So आप दुआ तो यही कर सकते हो। अच्छा, आपने again another one of those things जो originally points में नहीं थी, but you brought up Babar and Rizwan, right? अच्छा यार, Babar at first drop, he used to play there. अब वापस वहां पे आया. He scored his 6th consecutive 50 from that batting number, ठीक है। अगर आप पहली 350s देखें तो उसमें स्ट्राइक रेट्स काफी लो हैं। इस दफा स्ट्राइक रेट सारे उन 350s में 150 से ऊपर थे। लेट्स फॉरगेट द 13 of 24 for a bit. We're not Yes. talking about that right now. We're siphoning हाँ. that off. That is definitely the worst he's ever been in any T20 game, I feel. He But seemed to be you know, struggling with his hamstring also. हाँ, yeah, थोड़ा इंजरी कंसर्न भी लग रहा था, but if you I look at mean, his first you 50, could have played Azam and left Babar out, but no, you had to make him you play could all have 5 games. you could have left both of those guys out on occasion, right? उनको पांचों मैच खेलने बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वो 2-3 खेल जाते ठीक था। बट चलें, ये तो बात हम कर चुके हैं ना। बाबर की पहली 50 आप देखें तो कैच अप नॉक था, सेकंड 50 में ही स्लोड डाउन इन द मिडिल, थर्ड 50 में एज सच अच्छी पेस की है उसने, कोई उतनी कोई फ्लॉ नहीं थी, सही है। रिजवान ने 90 ऑफ 63 किए, कैचअप नॉक था, मगर आपकी पूरी टीम का ही स्कोर 158 था। तो Exactly. इन दोनों का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस टीम में? हाउ डू दे फिट इन एंड हाउ डू वी डील विद द टॉक्सिसिटी दैट सराउंड्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कोर्स विद रिस्पेक्ट टू बाबर एंड रिजवान, बिकॉज़ इट्स गॉटन एग्जॉस्टिंग ऑन सोशल मीडिया ऑनेस्टली। It really has. It really has, and it's so strange कि अब आप देखें कि अभी भी आधी कॉन्वर्सेशन बाबर और रिजवान को क्या वापस ओपन करना चाहिए। अगर पहले ओवर में कोई आउट हो जाता है तो वो वैसे ही दोनों ओपन कर रहे होते हैं। कौन से नंबर पे कौन खेलेगा, एक कंटिन्यूअस चीज चल रही है। और जैसे आपने कहा कि अभी तो हम रैंट की अगर बात करें, अभी तो हम हारिस की तरफ जा ही नहीं रहे। मोहम्मद हारिस का या इस सीरीज में ना होना एक वो ऐसी डिसीजन है जो जिसको शायद हम कभी नहीं समझ पाएंगे। और और भी ये ना बड़ी सोच, डिसीजंस है हारिस के इर्द-गिर्द जिसको हम नहीं समझ पा रहे, मगर बट या इट्स अभी हम एब्सोल्युटली अगर सोचें कि आपके पास इनसेन। एक मौका था, तो अब आप देखें, we Babar and Rizwan are Babar and Rizwan. We know exactly what they can do.
अब आपने उनको वो मौके देने हैं, आपने आपने क्या एक्सेप्ट करना है कि वो पावर प्ले में उस तरह से ज़्यादातर स्कोर नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर आप एक सर्टेन टोटल चेस कर रहे हो, तो आपको पता है कि वो दोनों हुँ, आके चेस कर सकते हैं। उन्होंने बड़े टोटल्स भी चेस किए हैं, 200 आई थिंक या इंग्लैंड के खिलाफ 200 चेस किया था उन्होंने आपको यार बड़े उनकी मैचेस में। 5 150 प्लस partnerships हैं, 8 100 प्लस partnerships हैं, and there is a solitary 200 plus partnership. So we know that they can do that job, यस, particularly while chasing. But with respect to the talent at Pakistan's disposal, you've got your Saim Ayubs and Mohammad Harises, you've got a Fakhr Zaman in there. How do these guys fit into the T2011 going forward? Would you play one of those guys? Would you play them both? Would you play, or set their batting order as per the game situation? How will you proceed with them? Because let's not kid ourselves, they have been top performers. अगर उन लोगों ने कई मैचेस हरवाए हैं थोड़ा स्लो खेल के शुरू में, तो जिताए भी तो काफी हैं यार, वो हम ऐसे एग्ज़ैक्टली। नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते और देखिए इसमें 2 तरीके हैं। एक तो है कि जैसे आपने कहा कि आप उनकी बैटिंग ऑर्डर पोज़ीशंस को फ्लेक्सिबल रखें, हम्म, सीइंग दिस मैच सिचुएशन एट हैंड, ठीक है? अगर आप एक थोड़े से ट्रिकी सरफेस पे खेल के 140 चेज़ कर रहे हैं, दे आर द बेस्ट 2 पीपल यू कैन सेंड आउट टू ओपन। लेट्स आल्सो नॉट टेल आवरसेल्व्स कि साइम जो है वो 3 पे नहीं खेल सकता। फ़खर ने दिखाया आपको वो कहीं भी बैटिंग कर सकता है। हम्म, आज़म भी हैं, इफ्तिखार भी हैं, आपके और अगर एक सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि जी मैच कंडीशंस ऐसी हैं कि आप ओपन कर रहे हैं और आप पहले बारी खेल रहे हैं और अच्छी बैटिंग विकेट है, उसमें यू हैव नथिंग टू लूज। अगर हम्म, आप इनमें से एक के साथ साइम और फिर फखर और फिर आजम को भेजते हैं और कहते हैं पहली बॉल से अटैक करो, देखें बहराम दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो तीनों फर्स्ट बॉल डक्स पे आउट होके 5 बॉलों के बाद बाबर और रिजवान वैसे इकट्ठे हो जाएंगे, जो हम सब कहते हैं सबसे बेहतरीन चीज हम्म, है। या अगर वो तीनों बैट्समैन 10-10 बॉलें खेल के आपको 20-20 25 रन भी देते हैं, आप पावर प्ले के अंदर 60-70 रन लेके बाबर रिजवान के लिए एक सेटअप कर देते हो। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। मॉडर्न T20 हम्म, क्रिकेट में आपके पास जब इतना टैलेंट है, आपके पास जब हम्म, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, आप क्यों नहीं उनके लिए भी आसानी करोगे? आप उनमें से एक से जरूर ओपन कराएं। एंड आई थिंक बाबर बैटिंग एट 3 इज शोन दैट ही कैन डू इट, बट लुक एट ईच कंडीशन डिफरेंटली। कभी हम्म, अगर जरूरत हो, जिस तरह हसीब कल आउट हुए, अगर साइम आउट होते, आई फेल्ट इट वाज अ परफेक्ट सिचुएशन टू सेंड इन फखर। यू हैव नथिंग टू लूज। फखर yeah, आता है और वो 15 से 20 बॉलों में आपको 40 मार देता है, आउट भी हो जाता है। ही इज डन एन इनक्रेडिबल जॉब फॉर यू। थोड़ा सा आपको इन दोनों को फिट अगर करना ही है, एंड अगेन जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत हम्म, ज्यादा मैचेस जिताए। आप इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप में फोकस मत करें, आप इनकी ओवरऑल एबिलिटी पे फोकस करें। इनके हम्म, इर्द गिर्द फास्ट स्कोरिंग खिलाड़ी रखें। आई मीन इट इट बॉगल्स द माइंड बैराम कि अगर आपके पास एक टॉप 6 है, विच मैं बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं जा रहा, विच कैन बी रिजवान, साइम, बाबर, फखर, इफ्तिखार, आजम, शादाब, हारिस, ये आपके पास कब इतनी डेप्थ थी अपनी बैटिंग में? हम्म, कब आपके पास इतने, और अभी तो मैं हसीब पे भी नहीं आया, ठीक है? वाकई, अभी तो मैं उधर भी नहीं आया, तो आपके पास इतने तो खिलाड़ी हैं जो कि इतने मैच विनर्स हैं। अभी हम बात कर रहे हैं जो आउट ऑफ फेवर खिलाड़ी हैं, बट व्हाट इफ आसिफ अली हैज अ सुपर पीएसएन? आसिफ अली इज probably the only batsman you have in Pakistan जो पहली बॉल से आके सिक्सेस मार सकता है। whatever young up and coming bats, आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास इतनी हम्म, रिचेस है, बट आप इतनी रिजिडिटी रखोगे कि नहीं जी, या तो बाबर और रिजवान ओपन करेंगे या बाबर और रिजवान 1 2 3 खेलेंगे। तो हम्म, थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा सा उनको भी वो दो, मैच सिचुएशन को देखो। सम गेम्स में रिक्वायर, अगर आप एक टीम के खिलाफ खेल रहे हो और वो 2 लेग स्पिनर लेके आए हैं और आपका एक प्लेयर जल्दी आउट होता है और वो अपने स्पिनर्स को लेके आते हैं, आप क्यों नहीं आजम को पहले भेजोगे? अगर या, आजम चल गया, उसने आपको रन बना दिए, आपका फायदा है। और अगर वो ना हम्म, चला, तो आपके पास फखर और बाबर की क्लास के खिलाड़ी हैं जो कि गेम को सॉरी फखर और बाबर के क्लास के खिलाड़ी हैं जो कि गेम को डीप भी लेके जा सकते हैं। हम्म, So it just boggles the mind. I think going forward, flexibility in their batting positions according to the game situation and giving them both the freedom to know कि देखें अगर एक सिचुएशन है, सपोज करें आपको क्वालिफाई करने के लिए 6 ओवरों में 80 रन बनाने हैं, आप बाबर और हम्म, रिजवान को भेजेंगे? आप क्यों नहीं या, फखर और साइम को भेज सकते? आप क्यों नहीं बिल्कुल, आजम और फखर, या आप क्यों नहीं इफ्तिखार और फखर को भेज सकते? योर गोल शुड बी 80 रन इन 6 ओवर्स, नॉट कि 6 विकेटों पे हुआ है या 7 विकेटों पे हुआ है या 0 विकेट्स पे हुआ है। वी हैव टू थिंक बेटर देन दिस, एंड आई होप दैट कम्स थ्रू विद द चेंज ऑफ मैनेजमेंट, दैट
are willing to understand कि having data alone is not good enough. डेटा को सही तरह यूटिलाइज करना चाहिए और आपको प्लेयर्स को उनकी सही पोजीशंस में खिलाना चाहिए. So Babar and Rizwan have a big role to play in Pakistan Hmm. cricket in all formats going forward. It's just about utilizing them in Pakistan's best interest. I'm not worrying about what is in their best interest. Yeah, I mean, definitely Pakistan do have the players, you know, a bouquet of superstars to hai unke paas, as Haider Azhar recently mentioned to me in an interview that will be out soon, that when he was formulating that team at Karachi Kings, he didn't want to have that bouquet of superstars. He had roles and he wanted to fill up those roles. So how Exactly. Pakistan optimally utilize those resources at hand will probably determine their fate. And I hope to, you know, see something of the sort, even though मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है. मेरी एक्सपेक्टेशन साहिब ज्यादा फरहान एट 7 ही है हसन भाई. Yeah. बट चले ऑपोजिशन पे थोड़ा सा आते हैं. यू मेंशन फिन एलन, बड़ी अच्छी मिसाल है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में यू नो पीपल बोथ मीडिया एंड फैंस लाइक दे टेंड टू लूज होप वेरी वेरी अर्ली. फिन एलन के 35 T20 आए थे सीरीज से पहले, उसकी 350s एंड 100 थी. इस सीरीज के अंदर स्टार्टेड ऑफ विद लाइक अ 15 बॉल 34, देन स्कोर्ड दैट 40 ऑड बॉल 70 समथिंग. फिर उसने वो 74. 137 रन्स ऑफ 62 भी किए. दो फेलियर्स थे बट दैट 137 रन्स ऑफ 62 डिलीवरीज, 62 में से 16 तो छक्के थे, 16 में से आधों में तो बॉल चेंज हुई है क्योंकि ग्राउंड से बाहर मार दी उसने. What you basically saw, and he broke the record, or not broke the record, but he leveled the record for most number of sixes in a T20 international innings. हजरतुल्लाह जज़ाई को उन्होंने लेवल किया जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में किए थे और अब डनईडन में फिन एलन ने कर दिए. But what we see over here is New Zealand sticking with the player because they know he has the skill set. उसको constantly उन लोगों ने faith दी है वो कि यार आप जाकर खेलो, आपकी जगह पक्की है. He ultimately came good. आपने आसिफ अली की मिसाल दी. Islamabad United do that for their players as well, don't they? There is that Yeah. level of trust, and that's what we see lacking in Pakistan. But Finn Allen is pretty much the best thing that could have happened, or Finn Allen coming into form is the best thing that could have happened for New Zealand going into this, Summer World Cup. Yes, and it's a case like you said of a player who has been backed, a player who's been told to play his natural game. Now imagine sending Finn Allen in at 7, not opening with him. Imagine sending him in at 7, thinking, okay, we know he can bat really well in domestic cricket, but let's check if he can bat at 7. No, Mm. no messing around. He had different opening partners in different games. His role did not change. He was not under pressure to do something he wasn't doing. Uh, he ruthlessly exposed us that we had Mm. no plan B against him, especially in the 100. With the greatest of respect to Hazratullah Zazai in Ireland, hitting 16 sixes Mm. against Ireland in a T20 in Dehradun and hitting a Pakistan attack with Rauf Zaman and Shaheen Shah Afridi in it for 16 sixes. Uh, जितना आप कहते हैं ग्राउंड छोटे थे, हमारे बैट्समैन के लिए भी वही ग्राउंड्स थे. So Yeah. Finn Allen coming into form, and Finn Allen, a player they backed through a lean period. Like I said, average of 22. Mm. 22 की एवरेज के बाद पाकिस्तान में बैट्समैन को कोई डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने दे. हम इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं यहाँ पे कि नहीं जी उसकी एवरेज देखो 195 का स्ट्राइक रेट बहराम ओवर Yeah. 5 गेम्स Unreal. एंड जस्ट Outrageous, otherworldly. बल्कि किसी ने लिखा हुआ था फिन एलियन. आई थिंक इट वाज नबील हाशमी. सही बात है यार, इस दुनिया के ट्रस्ट छक्के नहीं थे वो. trust Nabil to come up with a brilliant quip like that, and just Finn Allen showcasing his ability. Daryl Mitchell, जिसको शायद बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहें नहीं जी इसकी तो गेम ही नहीं है, तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, doing such an Glenn Phillips, incredible job. even though Glenn Phillips hasn't come good like we know he can for New Zealand, they're sticking with him और वो होगा एक दिन, चलेगा वो उनके लिए. आप देख लेना, अभी भी और इस सीरीज आपके में लिए एक मैच और तो आपके खेला है. लिए एक मुश्किल मैच में उसने 100 पार्टनरशिप की डैरल मिचेल के हम्म. साथ. आपने देखा कि वो आपके लिए क्या लेके आता है. आपके पास इतनी एबिलिटी थी कि आप केन विलियमसन की इंजरी के बाद उनको रेस्ट करके टिम साइफर्ट को ला सकते हो. डेवन हम्म. कॉनवे नहीं खेले, रचिंद्रा खेले, और आपने उन सबको मौका दिया उनकी बेस्ट पोजीशन पे. आपने एक ओपनर को दिखाया जिस तरह एक T20 ओपनर को खिलाया जाता है, जिस तरह उसको बिलीफ दी जाती है. हम बात कर हम्म. रहे थे बहराम, रिजवान और बाबर की. इंडिया ने कितनी सीरीज रीसेंट पास में खेली हैं जहां पे ना रोहित खेले हैं ना कोहली खेले, हम्म. because उनको पता है वो क्या Yep. कर सकते हैं. उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी और डिफरेंट प्लेयर्स को लेके आए. वो प्लेयर्स आपके लिए रन स्कोर कर रहे हैं. देखें, आपके न्यूजीलैंड ने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिया कि क्या उनके जो परफॉर्मर्स हैं वो कर सकते हैं. उन्होंने इस सोदी पे बिलीफ रखी, उन्होंने हम्म. सारों को ये मौका दिया. सो जब ये होता है फिर आपको यही करना पड़ता है. एंड जैसे वो कहते हैं सबर का फल मीठा है, और उनको तो बेस्ट फल मिला है. हम्म. उनको तो
बहुत ही कोई लजीज किस्म के फल मिल गए हैं। एंड वही डेप्थ चार्ट वाली बात आती है, पाकिस्तान की ऑन पेपर तो अच्छी डेप्थ चार्ट बनती हुई नजर आती है, मगर उस तरह आप वो बिल्कुल। टेस्ट नहीं कर पाए ना। तो खैर, लेट्स मूव ऑन। ऑफ कोर्स wonderful hitting display by Finn Allen, and probably will, rule the roost for years to come. Definitely, he Absolutely. was earmarked as that heir to Martin Guptill's throne, and a lot of people for the longest time were unconvinced. I think he's definitely, shattered those qualms now. He's put them to bed. अच्छा यार, bowling की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की लीडिंग विकेट टेकर इन द सीरीज टिम साउदी। ही इज ऑल्सो द लीडिंग विकेट टेकर इन टी20 इंटरनेशनल्स ऑफ ऑल टाइम। एक ही बॉलर हैं दुनिया में जो 150 से ऊपर टी20 इंटरनेशनल से विकेट ले चुके हैं। एंड द वे ही एग्जीक्यूटेड दैट स्लोअर वन, पाकिस्तानियों से तो वो चेंज ऑफ पेस पकड़ी ही नहीं जा रही थी। एंड ही समवन हुज ऑफ्टन ओवरलुक्ड, एक अनसंग हीरो है न्यूजीलैंड क्रिकेट के। ही इज बिन देयर फॉर eons literally, and fitness अभी भी अच्छी है, बहुत skillful है, maybe not Anderson level skillful, but still very very skillful. And he pretty much plays all formats as well. How big was he in this series? Because Pakistan विकेटें तो चले दी, they couldn't even get under him, easily, underneath He him, was under him. he was massive, Behram, because if you look at the fact that he went past Rashid Khan's record of most wickets against a single nation by taking 38 against Pakistan. Rashid has his record again, with the greatest of respect to him, in Ireland against Ireland. So it just shows you what a consistent performer he's been, and the way he utilized the change of pace, the way he outfoxed our batsmen. There was a point yesterday when he got hit for six, when he bowled 10 balls for 2 runs and a wicket. That kind of pressure is very difficult to come back from. Uh, just the way he bowls, just how good he is in the field. मुझे तो कल रात को सबसे ज्यादा स्ट्रेस ये हो रही थी सुबह को कि अब वो बैटिंग करने आ गया, वहां भी आके छक्के मार के आपको शायद मार मैच जाता हरा होता, दे। बिल्कुल मार जाता मारता होता। है। आई थिंक ही इज वन ऑफ द highest hitters of sixes in Test cricket for New Yeah. Zealand as well. So an incredible player. One showing off his experience, one showcasing that there is so much more to than just sailing pace. And when you look at what his contribution was, आप देखते हैं कि उनके इर्द गिर्द मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन, एडम मिल, ये सारे फास्ट बॉलर्स जो हैं, उनको यूज किया आपने। एक एंड से सीरिंग पेस और शॉर्ट पेस बॉलिंग कराई, एक एंड से आपने स्विंग और टेकिंग द पेस ऑफ द बॉल कराई। बैट्समैन के लिए आपने मुश्किलात पैदा की, और एक एंड पे आप देखते हैं कि हम हारिस रऊफ को वहां बॉलिंग करा रहे हैं जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अब इमेजिन कि आप सऊदी को डेथ पे लेके आना शुरू कर दें, या उन ओवर्स में लाना शुरू कर दें जहां पे उनके टैलेंट का फायदा नहीं होता। So I think he was a difference maker, and he is going to be very important for New Zealand on West Indian pitches, because New Zealand play all their games in the Caribbean. And someone like him is worth his weight in gold as a senior player, as a leader. And when you think of the fact कि उनकी bowling depth जो है, कि अभी Trent Bolt इस team में नहीं है, the fact बिल्कुल। that they can bring in Trent Bolt and already have Ferguson, Milne, Henry, Jameson, and so many other players, New Zealand cricket will probably be wanting another semi-final against Pakistan, thinking to themselves, "Is the kari lawange assi." So maybe they'll be believing in that. But he was incredible, and just the way and control with which he bowled yesterday on a two-pace surface was a lesson for Pakistan. Bilkul, I mean, concur with you word for word pretty much over there. Also, the fact that, Saudi is the guy who kind of fills in for Kane Williamson when he's injured or resting or whatever as skipper. But we saw Mitchell Santner captain them. तो आपको नजर आ रहा है कि यार उनको नहीं फिक्र किसी चीज की, वो बस चीजें ट्राई कर रहे हैं at this point. But anyway, slower one से एक natural segue निकलता है अब्बास आफरीदी, someone who you've worked with very closely at Multan Sultans. Back of the hand, slower one to die for. आपने मुझे off the camera बताया था when we met up in PC Karachi, I want to say, or Sheraton Karachi, or whatever Sheraton is now, Movenpick. वहां पे हम मिले थे, तो आपने बताया था कि this is a kid who leaves everything out there in training. तो नजर आता है मैच में भी यार कि ये बच्चा बड़ी जान मारता है. He also hit some very handy sixes बैट के साथ. He looked, more than just someone who is no mug with the bat. He looked more than that, right? PSL में भी हमने ये जरासीम देखे, फील्डिंग के भी उसकी वो काबिलियत देखी PSL के अंदर. So Abbas Afridi was one of the shining lights for Pakistan in this series. And yeah, I mean, it's interesting because he's not the sort of bowler who instills fear, in opposition batters, but he gets you wickets. He has a really good strike rate. और फिर से उन्होंने यही किया, डेब्यू में 3 फिर लिया, उसके बाद 2 विकेट्स ली. He's been really, really impressive overall as a complete package, and you've obviously, spent some time with him. तो जहां हम इतने ओवर टाइम चलेंगे इस पॉडकास्ट के लिए, वहीं पे थोड़ी अब्बास आफरीदी की कोई आप इनसाइट्स बता दें, कुछ स्टोरी सुना दें हमें. मैं अब्बास की आपको बताऊंगा, बहराम, कि सबसे पहली चीज दैट स्ट्राइक्स यू अबाउट अब्बास,
कंसिडरिंग के बहुत लोग शायद ये पहले नहीं जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी फैमिली का क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है, उमर गुल के नेफ्यू हैं उनके भाई के बेटे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर आता है उसके साथ। अब्बास की सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अब्बास इज वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्किंग प्लेयर्स। अब अब्बास अपनी फील्डिंग ड्रिल्स में जो एफर्ट डालता था, there was no surprise that he was getting direct hits in Multan Stadium, that he was running and taking catches, because Abbas was not leaving it to chance कि क्या ये कैच मैं फील्डिंग ड्रिल में पकड़ूंगा या क्या मैं नहीं पकड़ूंगा। He was giving it everything. अपनी बॉलिंग में कराची वाले मैच में जब उनको नो बॉल पे पहली बॉल पे इमाद ने छक्का मारा, तो हम काफी डिफ्लेट हो गए थे। अब्बास को कैप्टन ने कहा कि कोई फिक्र नहीं करनी, एंड टू गेट बेन कटिंग, to finish off the game the way he did, winning you the game, and he ended up as a leading wicket taker. हम बहुत सारे लोगों को Hmm. एहसान याद है, because एहसान was like a steamroller through the tournament. Hmm. अब्बास ने आपको probably, अब्बास इज द रीजन कि आप probably शायद एक रन से फाइनल हारे, जब उन्होंने हारिस रऊफ को डेथ पे अटैक किया, वो छक्के Hmm. चौके मार के। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट सरप्राइज्ड यस्टरडे दैट ही केम आउट एंड स्कोर्ड सो वेल। ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा एक जबरदस्त, आई मीन अगर मैं एक फोर प्रॉन्ग पेस अटैक देखता हूं किसी सिचुएशन Hmm. में, जिसमें आपके पास डेथ में शाहीन, जमान, हारिस और अब्बास हैं, वो एक एक ओवर भी कराएं तो दे कैन डू वेरी वेल। ही बैट्स वेरी वेल, ही फील्ड्स इनक्रेडिबली। कल भी बहुत एक जबरदस्त कैच पकड़ा, एंड उसकी स्टोरीज मुझे यही याद है कि वो कभी किसी सिचुएशन में, कभी भी किसी ट्रेनिंग सेशन में लेट नहीं था। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑन टू द ट्रेनिंग सेशन। देयर वाज नेवर अ सिचुएशन कि अगर उसको आप कहते थे वन मोर कैच, तो वो कहता था नहीं। ही वाज ऑलवेज रेडी टू टेक अनदर कैच, वर्कड ऑन हिज फील्डिंग, वेंट टू द जिम एवरी डे, लुक्ड आफ्टर हिमसेल्फ। जब आप वापस आते थे ट्रेनिंग से, he would always go into the gym. He was doing his ice bath. He was doing the other thing. He's a very sensible boy. He would Hmm. understand. And अब्बास की सबसे अच्छी चीज थी कि एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ, बड़े Hmm. खिलाड़ियों के साथ, लेजेंड्स के साथ, जैसे कि कीरन पोलार्ड है, उनके साथ जब वो बोलते थे तो उनकी बात सुनता था। जब कोचेस बोलते थे, जो गाइड करते थे लोग, उनकी बात वो सुन के टेक ऑन बोर्ड करता था। It is absolutely no surprise. I was over the moon when he made his debut, Hmm. because I think he deserved to do it. He played very well. He's going to be a very important player for Multan Sultans in the PSL. And he's definitely capable, Behram, like you said, of being more than just a bowler. अभी आपने उसको Hmm. डेथ पे बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा, एंड आई डू Yeah. बिलीव कि अगर आप जमान और उससे डेथ पे बॉलिंग कराते, आपको 10 15 20 रन का फर्क पड़ सकता है। बिकॉज लाइक Hmm. यू सेड, ही गॉट अ सुपर्ब कंट्रोल ओवर द बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, गॉट अ हैट्रिक इन द लास्ट पीएसएल। जब उसने कोयटा के खिलाफ हैट्रिक की थी, तो उसको हमने बड़ा छेड़ा था कि भाई अब हमें ट्रीट चाहिए। तो अब्बास, अगर तुम ये देख रहे हो, वो ट्रीट तुमने अभी तक नहीं दी। But he's just an incredible young man, very hardworking, very humble, and he's got the right head on his shoulders. And Hmm. it's no surprise when you look at Omar Gul, one of the Yeah. all-time greats. जिस तरह गुली भाई हैं, जिस जिस तरह उनकी ह्यूमिलिटी है, और जिस तरह उनकी फैमिली की आप देखें कि they're such respectful, hardworking people. Abbas is a chip of the old block in this case. Hmm. I couldn't be happier for him. And honestly, there's a special player in there. He's a very, very special player. Yeah, those things are great to hear, particularly for Multan Sultans fans, क्योंकि अब तो PSL आ रहा है and they already know what he's capable of. But like you mentioned, work ethic जो है, talent can only get you so far. मेहनत और work ethic और hard work वो आपको आगे लेकर जाती है, and he doesn't have to look too far to draw inspiration. Of course, Umar Gul was an absolute professional when it came to these things. And what's most exciting is that he's a developing cricketer. अभी छोटा है. Yes, He could yes, add some exactly. clicks to his bowling. थोड़ा तेज हो Yeah, सकता है. for sure, शायद for और कोई sure. वेरिएशन सीख सकता है, बैटर बेहतर बन सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फील्डर तो अभी भी काफी जबरदस्त है, बट या लॉट्स टू लव अबाउट अब्बास आफरीदी। अच्छा, just to close off then, Hassan bhai, I know we've kind of touched upon this already, but what now for Pakistan? क्योंकि 11-12 T20 इंटरनेशनल्स रह गए हैं, लग तो यही रहा है कि आप थोड़ी डरपोक वाले एंगल से जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, एंड apart from that one set template that we know will work a lot of times, there is no contingency plan, and that is a scary thought. And like क्या करेंगे पाकिस्तान आप, क्योंकि the closer you get to the T20 World Cup, the lesser the room is for experimentation. Then you have to start building a settled squad जो आपका आपकी जाकर start करे। तो yeah, I mean, it's not particularly promising, is it? It's not. It's very worrying, and I think you also have to look at the fact that by the time the England T20s come around, you need to have, like you said, a settled squad. You need to have a settled Hmm. lineup, a lineup that you think, right, ये 13 players जो हैं, इनको हमने इस तरह Hmm. move करना है.
एक्सपेरिमेंटेशन का ये मौका था, आपने काफी हद तक गवा दी है। अब आपको एक टेम्पलेट पे डिसाइड करना पड़ेगा और फिर आपको उसको ऑल द वे बैक करना पड़ेगा। क्या हमारे में वो हमारे में स्ट्रेंथ ऑफ माइंड है कि हम उसको हम्म, बैक करेंगे ऑल द वे, या हम बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह हमने T20 वनडे वर्ल्ड कप में किया था, वापस चले जाएंगे कि नहीं जी बाबर रिजवान ओपन करेंगे और किसी और को 3 या 4 पे खिला लेंगे। A हम्म, lot of that will depend on the management. A lot of that will depend on the या support the captain gets. A lot of that will depend on how the PSL goes. For Pakistan, the most important thing is identifying, like you said, a plan B, a plan C. शदाब अगर खुदा ना खास्ता अवेलेबल नहीं है, तो आप उनकी बैटिंग और फील्डिंग तो बहुत कम सिचुएशंस में रिप्लेस कर सकते हो, बट हम्म, क्या अबरार या उसामा उनकी बॉलिंग रिप्लेस कर सकते हैं? क्या नवाज आके उनकी बैटिंग और बॉलिंग ऑगमेंट कर सकते हैं? रिप्लेस तो बहुत ही मुश्किल है। खुदा ना खास्ता क्या अगर आपके पास, क्या इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस ले सकते क्या हैं? इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं? ये भी सोचना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग स्टॉक्स जो हैं, जमान, शाहीन, हारिस, अब्बास, ऑब्वियसली अगर एहसान फिट होते हैं, नसीम ऑब्वियसली वसीम इज जूनियर, फिट, वसीम जूनियर इज वसीम अराउंड, ही वसीम वसीम hasn't जूनियर done too wrong. uh, does, and again, I think we can be certain of this. He will have an incredible PSL. I know it. Does Fahim Ashraf have something to offer to Pakistan cricket, which Hmm, he's does so often for Islamabad United, but we don't see enough of it hmm, with that. So I think Pakistan need to now go away, see how the PSL works out. Will someone put their hand up at the Under 19 World Cup, where we've had a really good hmm, start, and someone come out from there? I just like to see. I think the closing word here, जो सबसे जरूरी चीज है बहराम, वो है bravery. We have to be braver. hmm. We have to be. That doesn't mean कि आप पागल हो जाओ। लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं T20 का क्रिकेट का मतलब है पहली बॉल से घुमाना शुरू कर दो और टुल्ले मारना शुरू कर दो। बिल्कुल नहीं। Be braver in your outlook, be braver in your execution, and be braver in your decisions. And Hmm. understand that some will work, some will not. So going forward, there is a lot of fear, but also they say it's always, brightest after the dark. So when the dawn comes, it can be a good one. So back your players, give them a good supportive team environment. There were people there who were incredible in creating that, but obviously, Hmm. like you said, the uncertainty with everything. Yeah, So hopefully, a settled squad. Hopefully, just remember that these are professional players and they're desperate to do well for Pakistan. And you of just course. have to make sure that just the kind of support they receive at not just their home franchises in the PSL, but many of them play international leagues and receive a lot of support in those franchises too. And there's a lot to be hopeful for, अगर हम देखें कि अभी हारिस, शदाब, नसीम जैसे खिलाड़ी आपके पास हैं जो कि आके आपको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मे बी अबरार इज दैट मिसिंग लिंक अगर वो फिट होता है, एंड ही Maybe. हैज अ गुड PSL. So, and someone like hopefully in this from my heart, I'm going to be very honest with you. I hope Faisal Akram has a PSL T20 to remember, because having a left arm leg spinner could maybe change things for Pakistan, the way we go about things. So there's a lot to look forward to, but the most important thing is that we're brave in how we go about it. And I think अगर हम दलेरी दिखाते हैं और Hmm. सही एटीट्यूड के साथ जाते हैं, देख सकते हैं अभी मायूसी है, बिल्कुल है, वो नहीं जाएगी, दूर नहीं जाएगी। प्ले स्टेशन ऑन करूंगा, उसमें गेम खेलूंगा, न्यूजीलैंड को 5-0 मारूंगा, और उसी के थ्रू कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं है हमारे पास। बट या गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक पाकिस्तान जो है दिलेरी, दे हैव टू बी ब्रेव। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे। Yeah, I think you summed it up quite nicely over there. The only thing I'd add over here is कि यार हमने 11 लड़के तो पहले भी बड़े अच्छे तैयार किए हुए हैं। प्लीज इस दफा फोकस करें कि यू गेट 15 to 16 यस, गाइज रेडी के जब खिलाना पड़ जाए, जब कोई मौका मिले, वो प्राइम डो परफॉर्म करने के लिए कम T20 वर्ल्ड कप। दैट्स व्हाट यू नीड टू लुक एट। यू नीड टू डेवलप अ स्क्वाड, नॉट जस्ट अ स्टार्टिंग 11, बिकॉज बिफोर द वर्ल्ड कप द स्टार्टिंग 11 लुक ग्रेट, देन थिंग्स वेंट हेवायर एंड बैम, एंड यू हैड नो यू वर आंसर। या, क्लूलेस। तो या, इस चीज पे फोकस करें कि एक पूरा पूल रेडी करना है प्लेयर्स का, जिससे 15 से 16 लड़के आते हैं। दैट शुड बी द फोकस, एंड यू स्टिल हैव सम टाइम टू फिगर दैट आउट। द पीएसएल शुड हेल्प विद रिस्पेक्ट टू further knowledge that is to be gained. But yeah, Hassan bhai, thank you for this marathon podcast and taking out the time. It's always an absolute pleasure to talk cricket with you. और मजा आया आज, बड़ी देर बाद किया हम लोगों ने। Yeah, sorry about the rants. It just gets much, but it's always brilliant to be here at Grassroots and with you. And I just think hopefully जो हम कह रहे हैं is what a lot of other people think, and हम्म, hopefully it's the solutions that Pakistan cricket needs can be found. हम्म, And we have an incredible group of players, and एक हम्म, बहुत जबरदस्त हमारे पास generation है. This is a generation that deserves between them to have at least one World Cup.
and hopefully, inshallah, the T20 World Cup is the one they bring home. Yeah, I mean, when you look at these, or this crop of players, you really hope that they have a title in them because they are that good. It's just that things have gone terribly wrong for them in recent times, and there are issues. We're not sidestepping from them. हमने बात की है Of सारों course की, not. बहुत but ज़्यादा we'll issues. always continue to back this team because that's Yeah, what yeah, fandom is yeah. all about, right? Yep, So yep, yep, anyway, yep. uh, if you guys enjoyed this video, like it, share it with your friends, subscribe to our channel, and yeah, thank you for lasting this long. If you enjoy these sorts of videos, we'll be back soon with similar content. Well, so yeah, on that note, goodbye and stay tuned for similar content on grassroots cricket.